Hello everyone, I am Arpita Sharma and welcome to my YouTube channel. Now you must be preparing well. Less than a year is left for your UPSC examination and I know your preparation is on track. Even if it is not on track, you are going to bring it back on track because this exam needs patience. All you require is dedication and patience to clear this exam, and you will, even if not in the first attempt or second, but till the third or fourth attempt, you are going to crack it because you are passionate, you are motivated to help the society, to empower the society. Now this video is for you if you are confused how to start your preparation. If you are confused, I am a beginner, how to bring my preparation on a correct positive path or track, this video is for all of you. Now, if you're a beginner, you must be wondering from which book we have to start our preparation. We are confused. Step number 1, download the syllabus. Download the syllabus of UPSC, prelims, mains, download it. It is easily available on UPSC's website. And if it is not, you cannot find it on UPSC's website, then you can find it on every other online coaching's website like Byju's or Clear IS or Insights. You will easily find it. Okay, so just download the syllabus. पहला स्टेप अगर आप बिगनर हो तो क्या है कि आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए. सिलेबस पता करने के लिए आपको उसे डाउनलोड करना पड़ेगा. या तो यूपीएससी की वेबसाइट से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप बायजूस, क्लियर आईएएस, इनसाइट्स, ये सभी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आप इनकी वेबसाइट से जाकर सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस. Second doubt which students generally have, it is from where to start. So if you are a beginner, complete beginner हुआ, तो आपको NCERTs से शुरू करना है. If you are a beginner, start with the NCERTs. I am explaining in both languages, okay? तो सबसे पहले NCERTs क्लास 6 से 12 तक की उठाएं. First pick up class 6 to 12th NCERTs. Just go through class 6, class 7th NCERT. History, subject wise you can complete. First history, class 6, class 7, class 8, class 9 till class 10th, not 11th and 12th. पहले कम रखो, ठीक है? Because you are a beginner, just keep the pressure slightly off from your mind, okay? Because you are a beginner. Class 6 to class 10th NCERT, complete them subject wise. After completing class 6 to 8th, 10th भी नहीं, बहुत ज़्यादा pressure हो जाएगा. Class 6 to 8th NCERT, after completing them, you will be in a position to solve approximately 4 to 5 questions which are put up by UPSC in prelims. prelims में जो questions आते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप अगर NCERT क्लास 6 से 8 की पढ़ लेते हो तो कम से कम 4 से 5 questions आराम से सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी डाउट. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बिल्कुल करेक्टली सॉल्व करोगे. ओके, जस्ट ट्राई इट. Once you do it, you will be confident enough to move forward. एक बार ये कर लेते हो ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके, फिर धीरे धीरे आपको स्टैटिक बुक्स कलेक्ट करनी है. सेकेंड स्टेप वॉज NCERT. थर्ड स्टेप, आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 6 to 8th NCERT and solving 2 to 3 previous year question papers of prelims, you have to purchase the static books. Okay, which static book? Everything is given on my YouTube channel. Just search for it. एक प्लेलिस्ट होगी रीडिंग, रिवाइजिंग, नोट मेकिंग, उसमें जाकर आप सारे स्टैटिक बुक्स क्या चाहिए आपको वो वहाँ पर मिल जाएगी. I have this playlist on my YouTube channel with the name reading, revising and note making. So you can search for the static books over there. All right. Go to the static books. Now the remaining NCERTs class 9th to 12th. Complete them with the static books. Do not just waste all your time in just only the NCERTs, then move forward to the static books. It will waste lot of time, right? ऐसा मत करना कि NCERTs पहले खत्म कर ली, अब NCERT खत्म करने के बाद हम static books पढ़ेंगे. ऐसा मत करना, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, right? You have less than a year, right? तो less than a year बचा है तो आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना. Just study one topic from NCERT, then study the same topic from the static books. Step number 4 is the current affairs. Now there are some students who recommend reading 2 newspapers. That is a waste of time because you don't have much time right now. Okay, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है अभी, क्योंकि अगले साल मई एंड में ही एग्जाम है.
ओके तो इसलिए आपके पास टाइम तो ज़्यादा है नहीं, तो आप अगर ऐसा करोगे 2 न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए तो पूरा दिन निकल जाएगा. इफ़ यू स्टार्ट स्टार्टिंग 2 न्यूज़पेपर्स इन अ डे, योर होल डे विल बी वेस्टेड. सो स्टार्ट रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर. Now, from the exam date, 2.5 years before the exam, all the current affairs should be on your fingertips. Any backlog you can cover it through Insights or Vision ISS website. Okay, कोई backlog है ना अगर आपका, वैसे तो 2.5 years पहले एग्जाम के सारे करंट अफेयर्स आपको समझ आने चाहिए, बट अगर बैकलॉग हो गया है तो आप Insights की या Vision ISS की मैगजीन्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में. ओके तो अब आगे के महीनों के लिए तो पढ़ना पड़ेगा खुद. हाउ टू मेक नोट्स. नाउ डेली न्यूज़पेपर रीडिंग ऑफ 90 minutes यू हैव टू डू. सुबह सुबह उठ जाओ जल्दी, राइट. वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. डोंट बी लेट इन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग. ठीक है, ऐसे नहीं 10 बजे या 12 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना. रात को टाइम से सो, सुबह जल्दी उठो 6 बजे के आसपास. 6 AM in the morning you should wake up and start reading the newspaper in 90 minutes. Keep this in mind that in 90 minutes after getting freshen up, in 90 minutes you are going to cover the newspaper. Now you do not have to note down each and every news. What you have to do is simply filter the newspaper. Mark the important news as per your syllabus. GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4. Mark the news. Important news. Political news are not there in our syllabus, right? So mark the news and then just go through them, summarize. After reading one news, summarize in 5 to 10 or maximum 20 points what you have understood. After completing the newspaper at night around in the evening around 6 PM or 8 PM, I upload the Hindu decoded lessons also on the same channel. You can go through my lessons and whatever extra information I am giving you, you can note it down in your current affairs register. Okay, your Hindu is done, current affairs is done. That is all what is needed. My current affair courses are enough. Okay, do not waste your time in searching 100 of the sources for current affairs. आप हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ लो, मेरे लेसन्स देख लो, काफ़ी है, इतना प्रेशर नहीं लेना. All right. Now step number 5. After completing 10 to 15% of your syllabus, just download previous year question papers, mains and prelims. Okay, both previous 3 years question papers for prelims and mains. Try to solve them. Whatever question you are not, you do not know the answers, just look at the solution. Okay, Insight और वेबसाइट के आपको Insights और Vision की वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे. जिनका सोल्यूशन नहीं पता, सोल्यूशन देख लो, लर्न कर लो, लर्न द सोल्यूशन ऑल्सो. ओके, कीप सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टिल योर एग्जाम. धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, राइट. और फिर आप वो भी कवर कर लोगे जो बुक्स में नहीं है. That is the benefit of solving previous year question paper. You will be in a position to cover that information also which is not in your books. Okay, these are the 5 steps to start your preparation. ये वो 5 steps हैं. Be confident. थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं. ज़्यादा कोचिंग्स पर और बाहर के इन सब चीज़ों पर ना डिपेंडेंट मत होना. Do not get dependent or attached to the coachings. Okay, your self study is going to help you. लास्ट में आपकी सेल्फ स्टडी ही हेल्प करेगी और कोई हेल्प नहीं करेगा. इफ़ यू वांट टू टेक योर टेस्ट सीरीज लेना है, आई हैव ऑल्सो लॉन्च्ड एंड एट अ वेरी मिनिमल प्राइस, 1000 rupees प्राइस, मेन्स decoded. You can join it. You can just go through the Telegram channel link which I have given in the description box. Go to it and join the channel, and there is a PDF pinned up on the top of the channel. Just click on it. The timetable I have given, you can contact me, the mail ID is also given, and you can enroll in those test series. Or if you want to enroll in prelims test series, then Insights is the best. टेक्स्ट बुक बेस्ड एक उनका कोर्स चल रहा है, आप उनमें enroll कर सकते हो. टेक्स्ट बुक बेस्ड वो क्वेश्चंस बनाएंगे और आपको सॉल्व करना होगा, प्रीलिम्स के लिए है वो. Okay, these are the 5 steps. Now the 6th step is that you do not have to lose confidence. कोई भरोसा नहीं करता, मत करने दो. खुद पर कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए, राइट. आप खुद पर भरोसा करो. दैट इज व्हाट इज नीडेड. ओके, दैट इज इनफ. नथिंग एल्स इज नीडेड. किसी और का भरोसा या कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए होता है, अपना खुद का चाहिए होता है. ओके, दैट्स इनफ. सो दीज आर दी 6 healthy steps if you are a beginner in your UPSC preparation journey. I hope it was helpful. Thank you.